Students, welcome to physics class ninth, force and laws of motion. Last day we study about force, balanced force and unbalanced force. We know if an unbalanced force is applied on a moving object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced फोर्स इज़ रिक्वायर्ड. अगर हम बैलेंस फोर्स का देखते हैं तो नेट बैलेंस फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं तो उस समय नेट फोर्स ज़ीरो होता है. और नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो बॉडी में या ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होगा, यानी वो मूव नहीं करता है. अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. Newton studied the ideas of Galileo about the motion of an object. He formulated three fundamental laws which, given the motion of object, these three laws are known as Newton's laws of motion. You know, unit of force is Newton in EMKS system, but in CGS system unit of force is dyne, and 1 dyne is equal to 10 raised to power minus 5 Newton. At first we study about Newton's first law of motion. An object will continue to be in its state of rest or in a uniform motion along a straight line path unless it is acted upon by an external force to change that state. This means all objects resist change in their state. The state of any object can be changed by applying external forces only. According to Newton's first law of motion, a person is standing in a this is example. So a person is standing in a bus falls backward when the bus is started moving suddenly. This happens because the person and bus both are in rest while the person is not moving as bus starts moving. The legs of the person starts moving along with the bus, but rest portion of his has tendency to remain in rest. Because of this, person falls backward if he is not alert. A person is standing in a moving bus falls forward if driver applies brakes suddenly. According to Newton's first law of motion, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज तभी हो सकती है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए. अब इसके बाद में इनके एप्लीकेशंस में आपको दिया गया है कि बस पर बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है जब बस अचानक चलना शुरू होती है, पीछे की तरफ झुक जाता है, और जब ब्रेक लगाया जाता है तो बस पर व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है या गिर जाता है. तो इसमें आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज पढ़ा. नेक्स्ट डे वी विल स्टडी रिमेन लॉज.